Good morning, students. Today in this video we will discuss 8 more important identities related to trigonometry. These identities are very important and are very helpful to solve some equations or questions very fast. So first of all, let's watch these identities. The first one is 2 sin A cos B equals to sin A plus B plus sin A minus B. The second one is 2 cos A sin B. This is sin A plus B minus sin A minus B. And the third one is 2 cos A cos B is equals to cos A plus B plus cos A minus B. And the fourth one is 2 sin A sin B equals to cos A minus B minus cos A plus B. So first of all, we will prove these 4 identities. After that, we will see some more identities. So let's prove these. So first one is since we know that sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. And we know that sin A minus B equals to sin A cos B minus cos A sin B. So suppose this is one and this is second identities, or you can say that this is equation number first and this is equation number second. Now if we subtract, or you can say that if we add A and B, or you can say that if we add equation first and equation second. If we add equation first and equation second, then we get sin A plus B plus sin A minus B. LHS से LHS ऐड होगा और RHS से RHS ऐड होगा. तो देखिए cos A sin B पॉजिटिव, cos A sin B नेगेटिव. So when these two terms will be added, then these two terms with same value and with different sign, these values should be cancelled out, and the sin A cos B and sin A cos B 2 times is the remaining result. So it can be written as 2 sin A cos B. Okay, देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब हम ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास sin A cos B एंड sin A cos B रहेगा. उन दोनों को ऐड करेंगे, सो सेम वैल्यू 2 टाइम्स ऐड होगी, then it can be written as 2 sin A cos B. So this is the result number 1. This one, 2 sin A cos B equals to sin A plus B plus sin A minus B. So 2 sin A cos B equals to sin A plus B plus sin A minus B. Now for the second result, if we subtract here, subtract equation 2 from equation first. अगर सेकंड को हम फर्स्ट में से माइनस कर दें, देन वी गेट साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी. LHS से LHS माइनस होगा, सो इसमें से हमने माइनस किया. सिमिलरली यहां इसमें से ये माइनस होगा, सो ये पॉजिटिव, और जब ये माइनस होगा सो इसका सिंबल नेगेटिव चेंज हो जाएगा. सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम माइनस करेंगे. सो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सिंबल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. सो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. और ये नेगेटिव है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में. ये हमारा माइनस में और ये हमारा माइनस में. सो LHS तो हमारा ये मिलेगा, ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ दिस इज cos A sin B एंड दिस इज ऑल्सो प्लस cos A sin B. सो इट कैन बी रिटन एज 2 cos A sin B. Okay, so this is the result number second. Okay, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B equals to sin A plus B minus sin A minus B. Now come for the question number
come for the part number third. So to prove the third one, since we know, देखिए थर्ड में हमारे पास दोनों कोस टर्म है, so we know that cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a sin b, and the fourth one is cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b. Okay, suppose this is our first equation and this is our second equation. If we add first and second, then we get cos a plus b plus cos a minus b. फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करें, देन वी गेट, देखिए cos a cos b cos a cos b, देन वी गेट 2 cos a cos b, और ये हमारा माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. So this is equal to result number third. Okay, 2 cos a cos b equals to cos a plus b plus cos a minus b. Now come for fourth one. The fourth one is to prove fourth, subtract equation first जो है हमारा, उसमें से equation second को हम subtract करेंगे. So we get cos a plus b, इसमें से subtract करेंगे, then ये नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव, और ये हमारा नेगेटिव चेंज हो जाएगा. Then we get cos a plus b minus cos a minus b इक्वल्स टू, देखिए cos a cos b माइनस cos a cos b कैंसिल आउट, और यहां हमारे पास ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस 2 sin a sin b. ओके, 2 sin a sin b. अगर मैं यहां से नेगेटिव सिंबल कॉमन ले लेता हूं, देन इट कैन बी रिटन एज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2 sin a sin b. ओके, अब हमारा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये हमारा जो है फोर्थ आइडेंटिटी के इक्वल हुआ. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फोर्थ वन. सो दीज आर 4 आइडेंटिटीज. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ these identities are from multiple to addition and subtraction. ये जो है, जो मल्टीप्लीकेशन है, साइन कोस मल्टीप्लाई, कोस साइन मल्टीप्लाई, कोस ए कोस बी मल्टीप्लाई, साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई, इनको जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है. अब बात आती है 4 मोर आइडेंटिटीज आर देयर, जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जो है मल्टीपल की मीन्स इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करती है. सो दीज आर, द फर्स्ट वन इज, you can say that sin c plus sin d equals to 2 sin c plus d upon 2 and cos c minus d upon 2. देखिए, अगर ये हमारी जो वैल्यू है a plus b equals to c, okay, if we take let a plus b equals to c and a minus d equals to a minus b equals to d. okay, suppose a plus b equals to c और a minus b equals to d. so ये हमारी वैल्यू हो जाएगी sin c plus sin d. so हमें क्या करना है, ऐड करना है. so देखिए, जो a, इन दोनों को ऐड करें, if we add then 2a equals to c plus d and a equals to c plus d upon 2. so ये वैल्यू हमारी c plus this value d now equals to, देखिए, so since we know that sin a plus b plus sin a minus b, this one equals to 2 sin a cos b. okay, now put a plus b equals to c, so it can be written as sin c plus it can be written as d. so sin c plus sin d equals to 2 sin, now a is c plus d upon 2 and cos b को फाइंड आउट करने के लिए हम एक में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 2b इक्वल्स टू c माइनस d एंड b इक्वल्स टू c माइनस d बाय 2. सो cos c माइनस d बाय 2. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस वन. ओके, सिमिलरली वी कैन राइट वन मोर आइडेंटिटी, दैट इज, यू कैन से sin c minus sin d. this is c and this is d. so sin c minus sin d equals to 2 cos c plus d upon 2 and sin c minus d upon 2. this is the identity number 6.
Similarly, we can prove this one. The seventh one is cos C plus cos D, that is 2 cos C plus D upon 2 and cos C minus D upon 2. And the eighth one is cos D minus cos C. This is D, so cos D minus cos C equals to 2 sin C plus D upon 2 and sin B. B means C minus D upon 2. This is the eighth one, cos D minus cos C. So cos A minus B, this is equal to D minus cos C. So it can be written as 2 sin A. A is C plus D by 2 and B is sin C minus D by 2. So these are the you can say that 4 identities. इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, यहां से मैं नेगेटिव सिंबल कॉमन ले लूं, देन इट कैन बी रिटन एज cos C minus cos D, ओके, इक्वल्स टू 2 sin C plus D by 2. यहां से भी अगर मैं नेगेटिव सिंबल कॉमन लूं, देन इट कैन बी रिटन एज D minus C by 2, और वो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट. So cos C minus cos D equals to 2 sin C plus D by 2 and sin D minus C by 2. These are the important identities, 8 important identities. These are very helpful us to calculate some equations or to sort out some equations very quickly. So now we will solve some questions based on these identities. So let's start. Question number 11 of exercise 3.3 of class 11th is cos this value minus cos this equals to this one. So let's start. Proof of 11th. So since cos 3 pi by 4 plus x, okay, so this pi by 4, so since we know, or you can say that let 3 pi by 4 plus x equals to c. अगर ये हमारे पास pi by 2 का केस होता, सो cos को हम कन्वर्ट कर लेते साइन में, बट इट इज द केस ऑफ pi by 4. इट इज द केस ऑफ pi by 4, नॉट द केस ऑफ pi और pi by 2. सो क्या करेंगे, इस पूरी जो एंगल है इसको मैंने अज्यूम कर लिया c, और ये वाला जो एंगल है 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको मैंने अज्यूम कर लिया d. सो LHS कैन बी रिटन एज दिस, LHS कैन बी रिटन एज cos दिस इज इक्वल टू c, सो cos c देन माइनस दिस इज cos d, ओके, cos c माइनस cos d, एंड वी नो दैट cos c माइनस cos d इक्वल्स टू 2 sin d minus c and sin c plus d. Okay, since we know that cos c minus cos d equals to cos c minus cos d equals to 2 sin d minus c and sin c plus d. So put the value 2 sin, what is d? D is 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, उसमें से हमें माइनस करना c. सो जब इसको माइनस करेंगे सो इट बिकम्स माइनस 3 पाई बाई 4, और ये हमारा माइनस एक्स, एंड साइन दिस इज साइन एंड c प्लस d. सो c मीन्स 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड d इज 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स. ओके, नाउ ये और ये हमारा कैंसिल आउट, सो हियर 2 साइन माइनस 2x एंड साइन, देखिए 3 पाई बाई 4, ये हमारा x एंड x कैंसिल आउट, सो वी गेट 3 पाई बाई 4, देखिए 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, सेम वैल्यू 2 टाइम्स ऐड है, सो वी कैन राइट इट 2 इंटू 3 पाई बाई 4. अगर सेम वैल्यू x प्लस x, सो वी कैन राइट इट 2x. So same value 2 times add है, so we can write 2 into this one. So 2 से हमारा 2 कैंसिल होके it becomes
3 pi by 2. So sine 3 pi by 2. Okay. So it can be written as, ये नेगेटिव सिंबल हमारा हम बाहर ले लें बिकॉज साइन के साथ नेगेटिव होता है. सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. ओके. सो ये नेगेटिव हमारा बाहर आ जाएगा. सो ये माइनस एंड 2 साइन 2x. ओके. 2 साइन 2x and now okay, sorry, this is d by c by 2 and c by d by 2. So divided by 2 and divided by 2, because cos c minus cos d equals to 2 sin d minus c by 2 and sin c plus d by 2. So divide by 2. So 2 से 2 कैंसिल होके हमारा है x, और यहां भी हमारा एक और कैंसिल होके we get 4. So sorry, 3 into 2, or you can say 3 pi by 4. Okay. So this is 3 pi by 2, 3 pi by 2, this one 3 pi by 4 plus 3 pi by 4, 2 into 3 pi by 4. So ये हमारी वैल्यू आई 3 pi by 2, again 2, so divide by 2, so it becomes 3 pi by 4. So 3 pi by 4. So 3 pi by 4 sine 135 can be written as sine pi. 3 pi by 4 means 135 degree, and 135 degree can be written as pi minus 45. Sorry, pi plus 45. ये हमारा 135 डिग्री एंड 135 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई प्लस 45. सो नाउ इट बिकम्स -2 साइन x. हमारा किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ पाई. सो ये हमारा साइन साइन में ही रहेगा, एंगल 45. क्वाड्रेंट हमारा सॉरी 135 मीन्स पाई माइनस 45. देखिए 3 पाई बाई 4. सो 3 इंटू पाई मीन्स 180 अपॉन 4. सो 4 से हमारा कैंसिल हो गए 45. सो 135. सो 135 मीन्स 180 माइनस 45. 180 माइनस 45 is 135. So now it sine, this is angle 45 and this is second quadrant, and in second quadrant sine is positive. So ये हमारी वैल्यू यही रहेगी, and it can be written as equals to, this is -2 and value of sine 45 is 1 by root 2 and this is sin x. So ये हमारा कैंसिल हो गए, we get minus root 2 and sin x. So this is the RHS equal to RHS. This is the solution of question number 11. Now come for question number 12. Now come for the question number 12, that is प्रूफ ऑफ 12 इज, देखिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. दिस इज आवर LHS. दिस इज आवर LHS. सो दिस LHS कैन बी रिटन एज साइन 6x होल स्क्वायर माइनस साइन 4x एंड होल स्क्वायर, and this is equal to a square minus b square. So a square minus b square can be written as a plus b and a minus b. Okay, a square minus b square equals to a plus b and a minus b. Now this can be solved as sine, this is c and this is d. So sine c plus sine d, and we know that sine c plus sine d, sine c plus sine d equals to 2 sine c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. This is sine c plus sine d. So this can be written as sine c. C means 6x plus d means 4x upon 2 and cos c minus d. So 6x minus 4x divided by 2. So this is the solution of this one. Now come to this one. This is c and this is d. So sine c minus sine d, and we know that sine c minus sine d equals to 2 cos c plus d by 2 and sine c minus d by 2. So right here it can be written as 2 cos c plus d means 6x plus 4x upon 2 and sine c minus d 6x minus 4x upon 2. Okay, now
इक्वल्स टू, देखिए इट कैन बी रिटन एज साइन 6x प्लस 4x tan x, tan x by 2 means 5x. Okay, cos 6x minus 4x equals to 2x, 2x by 2, so cos x into, so here 2 because sin c plus sin d equals to 2 sin c, तो यहाँ पे 2, ये हमारा 2, now into 2 cos 6x plus 4x tan x by 2, so 5x, and sin 6x minus 4x 2x upon 2, so x. Now it can be written as 2, देखिए equals to 2 sin 5x into cos 5x. Okay, 2 sin 5x cos 5x into these two, and now sin x into cos x. Okay, so now this value can be written as equals to, अगर मैं इसको ट्रीट करूं एज ए, सो ये भी हमारा ए हो गया, एंड वी नो दैट 2 sin a cos a इक्वल्स टू sin 2a. ओके, सो ये जो वैल्यू हमारी इट बिकम्स sin 2a, a मीन्स 5x, देन सेम यहाँ पे ये है, सो इट बिकम्स sin 2x, सेम आइडेंटिटी, ये a तो ये भी a, 2 sin a cos a sin 2a, so can be written as sin 2 into 5 tan x and sin 2x. So this is the solution of proof of question number 12. Now come to question number 13. Now question number 13 is देखिए cos square 2x minus cos square 6x. Okay, so this can be written as cos square 6x minus cos square 6x means cos 2x plus cos 6x into cos 2x minus cos 6x. Okay, now cos c plus cos d, it is cos c plus cos d equals to 2 cos c plus d upon 2 and cos c minus d upon 2. So it can be written as 2 cos c plus d, so 2x plus 6x upon 2 and cos 2x minus 6x upon 2. Okay, now into this one cos c minus cos d, so cos c minus cos d, cos c minus cos d equals to 2 sin d minus c upon 2 and sin c plus d by 2, so can be written as 2 sin, okay, d minus c, so this is c and this is d, so cos c minus cos d equals to 2 sin d minus c, so 2 sin 6x minus 2x upon 2, then sin c plus d, so you can say 6x plus 2x upon 2 equals to 2 cos, okay, 6 and 2 8, 8x upon 2, so 4x. Now cos 2x minus 6x, so minus 4x by 2, so minus 2x into 2 sin 6x minus 2x, 4x by 2, so 2x and sin 4x. Okay, now देखो 2 cos 4x and sin 4x, so it can be written as 2 sin a, or you can say 2 sin 4x into cos 4x into 2 into sin 2x, and we know that cos minus x equals to cos x, so cos minus 2x can be written as cos 2x, so this is equal to 2 sin a cos a, this is a, so ये भी a, means 2 sin a cos a equals to sin 2a, so sin 2 into a means 4a into sin 2 into 2x, so we get sin 4 into 2 8a and sin 4 it is x,
So sin 8x and sin 4x, this is equal to RHS. So this is the proof of question number, this is the proof of question number 30. Now come on some more questions. Now question number 14th is, this is sin 2x, so sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x. Okay, now we have to convert these 2x, 4x and 6x into 4x and cos x. So हमें यहाँ पे sin 4x चाहिए, तो हमारे पास sin 4x है, so ये तो हम एज इट इज रखेंगे. नाउ जो रिमेनिंग हमारे पास sin 2x एंड sin 6x है, उनको हम आइदर sin 4x में या cos x में ब्रेक करेंगे. So sin 2x can be written as 2 sin x cos x. Okay, प्लस, और यू कैन ब्रेक इट, चलिए हमें यहां पे 6x की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इस 6x को ब्रेक करते हैं पहले. सो sin 2x प्लस 2 sin 4x एंड 6x कैन बी रिटन एज sin 2x plus 4x. Okay, so it can be written as sin 2x, or you can apply in these two terms, or you can apply sin 2x plus sin 6x plus 2 sin 4x. Now this is equal to C and this is equal to D. So sin C plus sin D, this can be, since we know that sin C plus sin D equals to 2 sin C plus D by 2 and cos C minus D by 2. So it can be written as sin C. So this 2x is equal to C and 6x equals to D. So in these two terms, if we apply this identity, then it can be written as 2 sin C plus D, means 2x plus 6x by 2 and cos C minus D. So 2x minus 6x by 2 plus 2 sin 4x. So equals to 2 sin 6x plus 2x equals to 8x, 8x by 2, so can be written as 4x. Okay, now cos 2x minus 6x, so equals to minus 4x divided by 2, so minus 2x plus 2 sin 4x. Okay, now यहां से हमारे दोनों टर्म से 2 sin 4x कॉमन, देन यहां हमारे पास रहेगा cos 2x and plus 1. Okay, equals to 2 sin 4x. Now cos 2x, देखिए cos minus 2x can be written as cos 2x because cos minus theta equals to cos theta. So cos minus 2x can be written as cos 2x. Now अब इस cos x 2x को हमें किस में कन्वर्ट करना है, cos में. So we know that cos 2x equals to 1 minus 2 sin square x equals to 2 cos square x minus 1 equals to cos square x minus sin square x. These three identities are for cos 2x. So यहां से हमें इस 1 को एलिमिनेट करना है. So we apply this identity. So 2 cos square x minus 1, this is the value of cos 2x and plus this one. So ये 1 और ये 1 हमारा cancel out and it can be 2 into 2 4, then cos square x and sin 4x. So this is equal to RHS. So ये जो है हमारा क्वेश्चन जो 14th है उसका प्रूफ है. नाउ कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज फिफ्टींथ इज cot 4x. देखिए cot 4x इंटू sin 5x plus sin 3x. Okay, so this can be written as 5x minus 3x, so cot 4x. So now cot 4x, it can be written as cot x, this one. So यहां पे LHS, this is our LHS term. So मुझे यहां पे देखिए sin 5x minus sin 3x लेके आना है. यहां मेरे पास प्लस है, सो मैं क्या करूं, यहां पे
if we can write it cot 4x. So cot 4x can be written as cos 4x upon sin 4x. Since cot 4x equals to cos 4x upon sin 4x. Now sin 5x plus sin 3x. So this is our this is our sin. Suppose this is C and this is D. So it can be written as sin C plus sin D. So sin C plus sin D equals to 2 sin C plus D. So 5x plus 3x divided by 2, and cos C minus D. So 5x minus 3x divided by 2. So equals to cos 4x upon sin 4x. Now 2 sin 5x plus 3x 8x by 2. So 4x into cos 5x minus 2x 2x upon 2x. So x. So अब हमारा sin 4x ये हमारा कैंसिल आउट. So 2 cos x cos 4x. This is LHS. This is the value of LHS. Now come for RHS. Now RHS is cot x and sin 5x minus sin 3x. So this is cot x can be written as cos x upon sin x into now sin C minus sin D. Sin C minus sin D can be written as this is C minus D. So 2 cos C plus D. So 5x plus 3x by 2 and sin C minus D. So 5x minus 3x by 2 equals to cos x upon sin x into 2 cos 5 plus 3 8x by 2. So 4x and sin 5 minus 3 2x upon 2. So x. ये हमारा ये कैंसिल आउट and 2 cos x cos 4x. This is RHS. So both LHS and RHS both are equal. So this is the proof of question number 15. Now come for the question number 16. So in 15 LHS equals to RHS. Now come for the question number 16, that is 16 cos 9x. देखिए cos 9x minus cos 5x. Okay, this can be written as cos 9x minus cos 5x. So cos C minus cos D. Cos C minus cos D equals to 2 sin D minus C. So 5x minus 9x upon 2. 2 sin D minus C and sin C plus D. So 9x plus 5x upon 2. So this value, this value can be written as 2 sin, now 5x minus 9x, so we get minus 4x upon 2. So minus 2x and sin 9 plus 5, so 14 by 2, so we get 7x. And ये नेगेटिव सिंबल हम आगे ले आए हैं, so we can write here minus 2 sin 2x and sin 7x. This is the value of cos 9x minus cos 5x. Now come for the value sin 17x minus sin 3x. So sin C minus sin D, this is C and this is D. So sin C minus sin D, this can be written as 2 cos C plus D. So 17x plus 3x by 2 and sin C minus D, 17x minus 3x by 2. So can be written as 2 cos 17 plus 3, 20x by 2. So 10x and sin 17 minus 3, 14 by 2. So 7x. Okay. Now come for LHS. LHS means this value is equal to this one. So minus 2 sin 2x and sin 7x divided by, this is divided by this value sin 17x minus sin 3x. This is equal to 2 cos 10x and sin 7x. So हमारा
ये 7x cancel out, so we get 2 and 2 cancel out, we get minus sine 2x upon cos 10x. This is equal to RHS. So these are some questions based on the identities used in trigonometric functions. Thank you.